Good morning, my dear friends. Welcome to X Libris. Today with a new informative video that how cracking of joints happen. यानी कि जोड़ों का चटकना, यानी कि जब आप जोड़ों को खींचते या दबाते हैं या ओल्ड एज पीपल जब बैठते हैं तो उनके जोड़ों में चटकने की आवाज आती है, यानी एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज हम जानेंगे कि हाउ इट हैपेंस, ये होता कैसे है। तो आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि दिस ओनली हैपेंस इन अ साइनोवियल जॉइंट। हियर इज अ स्ट्रक्चर आई हैव मेड। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि साइनोवियल जॉइंट होता कैसा है। इट्स वेरी सिंपल दैट हियर आर टू बोन्स and has two cartilages on the tips or apexes of the bones, and this is a ligament in which it's enclosed. Inside the ligament is the main matter, which is synovial cavity, and it bears synovial fluid, which also has the main thing, ions and gases dissolved in it. तो जैसे ही हम अपने जोड़ों को खींचते हैं, so what my dear happens is this area increases. Synovial cavity का area increase होता है क्योंकि ligament is somewhat stretchable. So जब ये area increase हुआ, synovial fluid को more area मिला, and the gases inside it tries to escape in a form of a bubble, a simple thing. It actually escapes what the gas bubble escapes. For example, it's O2. It escapes and makes a pop sound, which actually is the cracking of our joints. The sound we listen. Now, what we think that by cracking of joints there are too many problems, this and that. This is just a normal thing. Because I told you the science about this. This was all for today. Thank you for listening. Follow X Libris.